All right, let's get right into it. Today we're going to unpack a really counterintuitive idea: the relationship between Imran Khan and Pakistan's military establishment. It's a story that's all over the news, but the analysis we're looking at suggests that maybe, just maybe, we've been reading it all wrong. I mean, the story you hear pretty much every single day is one of this epic, unending conflict, right? You've got the super popular political leader on one side and the permanent state on the other, locked in this huge battle over the country's future. It really feels like a divide that can't be crossed. But what if that's not the whole picture? The source material for this explainer offers a really fascinating thought, that if you strip away all the daily political drama and look at the big, geostrategic issues, their long-term goals are actually way more aligned than you'd ever guess. So here's the core of the argument. When it comes to the really big stuff, the decisions that define Pakistan's place in the world, Imran Khan and the military establishment aren't just on the same page. It's like they're reading from the exact same playbook. And look, this isn't just some vague theory. This analysis points to four huge, very specific areas: a brand new defense pact with Saudi Arabia, a multi-billion-dollar arms export strategy, that tricky balancing act between the US and China, and even mending fences with neighbors in the region. So let's break these down one by one. First up, let's talk about the big picture, foreign policy. These are the kinds of moves that shape a nation for decades to come, the ones with really long-term consequences. Okay, case in point, this new mutual defense pact between Pakistan and Saudi Arabia. This is a huge deal. It's a major strategic shift that puts Pakistan right at the center of security in the Gulf. For the current establishment, this is a cornerstone of their policy. And this is where that counter-narrative really gets interesting. The argument is that Imran Khan would have been all for this deal. The only difference would be how he'd sell it to the public. He wouldn't frame it as a simple state-to-state agreement. He'd package it as this grand pact for the Ummah, the entire global Muslim community. Same deal, totally different wrapping paper. Now, this idea of alignment doesn't stop there. Think about Pakistan's booming arms export industry. We're talking about billions with a B in sales of jets, drones, and ammo to countries like Azerbaijan, Sudan, and Bangladesh. This is a massive play for both cash and influence on the world stage. So you might think Khan would be against this, right? Well, according to this analysis, no way. In fact, it was his government that was overseeing the modernization of a lot of this hardware. He's always been big on national security and military strength. The argument is, he wouldn't just be okay with these sales, he'd probably be their biggest cheerleader. Now, let's talk about maybe the toughest job for any Pakistani leader: walking that razor-thin tightrope between the US and China. You've got to keep America happy, but you absolutely can't tick off your all-weather friend, China. It is a constant, high-stakes balancing act. And the case being made here is that Khan is actually perfect for this kind of balancing act. He did it when he was in office, and let's not forget, he famously had great chemistry with key figures like Donald Trump. So, this whole strategy we see now of talking to Washington while keeping Beijing close, that's basically the Imran Khan playbook, just with a different person running the play. Okay, so that's the global stage. Let's zoom in a little bit and see how this all plays out closer to home, right in Pakistan's own neighborhood. A perfect example is the diplomatic reset with Bangladesh. We're talking about 50 years of a really rocky relationship. And now, they're talking arms deals, business opportunities, direct flights. It's a complete turnaround, a really historic shift designed to boost influence in the region. And this illustrates the argument perfectly. The source claims that Imran Khan, who happens to be super popular in Bangladesh, wouldn't have been a problem for this policy. He would have been its greatest asset. He could have been the best ambassador for this whole thing, maybe even making it happen faster and better. Okay, but let's be real. The analysis isn't saying they agree on absolutely everything. There's one big area where they see things differently, but it's how they disagree that's really the key. It all comes down to how to handle counterterrorism inside the country, especially in those tribal areas near Afghanistan. The establishment's view, it's a military problem, and you solve it with force. Khan's view, drawing on history, is that it's a political problem, and you need to solve it with dialogue, by talking to the local tribal leaders. So you see the difference? It's not about what they want to achieve. Everyone wants security. It's about how to get there. It's a disagreement on tactics, not on the ultimate goal. So, to tie all of this together, the analysis leaves us with this really powerful lesson from history. A story about two leaders who couldn't have been more different, but who made a deal that literally changed the map of the world.
We're going to travel back in time, all the way to 1803, to talk about the Louisiana Purchase. You've probably heard of it. This incredible deal where the United States bought a gigantic piece of land from Napoleonic France. And get this, the price tag for a chunk of land that would double the size of the US overnight was only $15 million. That's it. Just an unbelievable bargain, even for back then. But think about who was making this deal. You've got Thomas Jefferson, the American president, who was all about limited government. And on the other side, you've got Napoleon Bonaparte, a military emperor trying to conquer Europe. These guys were polar opposites, but their goals lined up just enough. Jefferson wanted to expand his country without a war, and Napoleon desperately needed cash for his own wars. So, they set their differences aside, focused on what was best for their nations, and boom, history was made. And that's what brings us right back to today. The analysis leaves us with this one huge question. When you see how much alignment there is on the big issues, and when you look at a moment in history like the Louisiana Purchase, you have to wonder, is it possible for the key players in Pakistan today to find their own version of that deal? A grand compromise that puts the national good above everything else? Well, the answer to that question could be what defines the country's entire future. पाकिस्तान की सियासत में कुछ दुश्मनियां ऐसी लगती हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर पाकिस्तान के दो सबसे बड़े हरीफ यानी इमरान खान और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट असल में अहम कौमी मामलात पर एक ही सफ़े पर हों तो आज हम इसी हैरानकुन दलील को खोलकर देखेंगे। ये सवाल सिर्फ कोई सियासी बहस नहीं है, ये असल में पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सिमत का सवाल है। क्या इतने गहरे इख्तिलाफात के बावजूद कौमी मफाद के लिए कोई कॉमन ग्राउंड मिल सकता है? चलें इसी बात को ज़रा गहराई से समझते हैं। तो इस पूरी दलील को समझने के लिए हमारा सफ़र कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले मुफाहमत की इस कॉल पर नज़र डालेंगे जिसने ये सारी बहस शुरू की। फिर देखेंगे कि फॉरेन पॉलिसी में वो हैरानकुन कॉमन ग्राउंड आखिर है कहाँ। हाँ, अफ़गानिस्तान पर जो इख्तिलाफ है उसको भी समझेंगे। और आखिर में तारीख से एक बहुत दिलचस्प सबक सीखेंगे जो शायद आगे का रास्ता दिखा सके। तो इस सारी बहस की शुरुआत होती है मुफाहमत की एक कॉल से। ये सिर्फ कोई सियासी बयानबाजी नहीं, बल्कि एक ऐसी तजवीज़ है जो ये सवाल उठाती है कि क्या पाकिस्तान के ताकतवर मराकज़ अपने इख्तिलाफात भुलाकर कौमी मफाद पर इकट्ठे हो सकते हैं। और यहाँ हमें वो बुनियादी दलील मिलती है जो इस आम तासुर को चैलेंज करती है जो हम सब सुनते आए हैं कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान नज़रियाती खलीज बहुत गहरी है, लेकिन सोर्स का दावा है कि ये तस्वीर शायद अधूरी है। तो देखें, एक तरफ तो वो कहानी है जो हम सब सुनते हैं कि इनके बीच इख्तिलाफात इतने हैं कि ख़त्म ही नहीं हो सकते, लेकिन दूसरी तरफ सोर्स का कहना है कि अहम तरीन फॉरेन पॉलिसी फाइल्स पर इनके दरमियान एक ज़बरदस्त स्ट्रेटेजिक कोहेरेंस यानी हम आहंगी मौजूद है। और इसी नुक्ते को अब हम आगे तफसील से देखेंगे। तो आखिर ये मुश्तरका मफादात हैं क्या? सोर्स सिर्फ दावा नहीं करता बल्कि फॉरेन पॉलिसी के 5 ऐसे बड़े शोबों की निशानदेही करता है जहां दोनों फरीकों के मकासद हैरानकुन हद तक एक जैसे हैं। पहला और सबसे अहम नुक्ता सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट। इसे पिछले साल का सबसे बड़ा सिक्योरिटी मुआहदा माना जाता है जो मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक रोल को और भी मजबूत करता है। ये कोई छोटा कदम नहीं है। यहाँ सोर्स का आर्गुमेंट यह है कि इमरान खान इस डील की मुखालिफत क्यों नहीं करते। हाँ, हो सकता है कि वो इसे पार्लियामेंट में डिस्कस करते या शायद इसे उम्मत के नाम पर पैकेज करते, लेकिन जो डील का असल मकसद है वो उनके अपने स्टैंड से बिल्कुल अलाइन करता है। दूसरा पॉइंट है पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने अपने हथियारों की एक्सपोर्ट में बहुत इजाफा किया है। ये ना सिर्फ मईशत के लिए अहम है बल्कि दुनिया में उसके स्ट्रेटेजिक असर को भी बढ़ाता है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ज़रा अंदाज़ा लगाएं, सिर्फ अज़रबैजान के साथ डील ही तकरीबन 6 अरब डॉलर्स की है। इसके अलावा सूडान, लीबिया और बांग्लादेश जैसे मुल्कों से भी डील्स हुई हैं। तो साफ है कि ये एक बड़ी और आप कह लें एग्रेसिव पॉलिसी है। सोर्स का तज्जिया इस बात को मजीद पक्का करता है कि इमरान खान इन डिफेंस डील्स की कभी मुखालिफत नहीं करेंगे, बल्कि सच तो ये है कि JF-17 जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए उनकी पुरानी हिमायत और इंडिया पर सख्त स्टैंस उस पॉलिसी से पूरी तरह मेल खाता है। तीसरा नुक्ता शायद सबसे नाजुक है, चीन और अमेरिका के बीच एक बैलेंस कायम रखना। ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का वो इम्तिहान है जहां एक गलत कदम बहुत महंगा पड़ सकता है। और सोर्स की दलील ये है कि इस नाजुक बैलेंस को बरकरार रखने पर एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान दोनों मुत्तफिक हैं। चौथा, बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात की बहाली। हथियारों की फ़रोख्त और फौजी ट्रेनिंग के जरिए ताल्लुकात को दोबारा ठीक करना एक अहम स्ट्रैटेजिक कदम है। सोर्स का दावा है कि इमरान खान, जो हमेशा मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद की बात करते हैं, इस पॉलिसी की भरपूर हिमायत करते हैं।
اور آخری نقطہ ہے اسرائیل فلسطین کا پیچیدہ معاملہ۔ سورس کی دلیل یہ ہے کہ اس حساس مسئلے پر پاکستان کے موقف کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے عمران خان کی عوامی مقبولیت ایک قیمتی اثاثہ ثابت ہو سکتی تھی، جو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کو ڈپلومیٹک کور دیتی۔ لیکن کیا ہر معاملے پر اتفاق ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ایک ایسا اہم شعبہ ہے جہاں سورس واضح اور گہرے اختلاف کی نشاندہی کرتا ہے، اور وہ ہے افغانستان۔ یہاں آ کر عمران خان کا نظریہ بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ افغانستان کا مسئلہ صرف فوجی طاقت سے حل نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کے مطابق ٹریڈ، لوکل لیڈر سے بات چیت اور ملٹری ایکشن، یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے۔ یہ وہ سوچ ہے جو اس خطے میں بڑی طاقتوں کی ناکامیوں سے نکلی ہے۔ ان کے اس مختلف نظریے کی وجوہات بھی صاف ہیں۔ وہ برطانوی، سوویت اور امریکی ناکامیوں کو تاریخی ثبوت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اصلی طاقت قبائلی عمائدین کے پاس ہے اور پائیدار امن صرف بات چیت سے ہی ممکن ہے۔ یہ خالصتاً ملٹری فرسٹ اپروچ کے بالکل الٹ ہے۔ اب اس پوری بحث کو سمیٹنے کے لیے سورس ہمیں تاریخ کی ایک بہت طاقتور مثال کی طرف لے جاتا ہے، جو یہ دکھاتی ہے کہ جب لیڈرز ذاتی اختلافات سے اوپر اٹھ کر سوچتے ہیں تو کیا کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ سوچئے، 1803 امریکہ اور فرانس، نظریاتی طور پر زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک طرف تھامس جیفرسن کی جمہوریت، دوسری طرف نپولین کی شہنشاہیت۔ لیکن جب موقع بنا تو انہوں نے اپنے نظریات کو بیچ میں نہیں آنے دیا اور لوزیانا پرچیز کی وہ تاریخی ڈیل کی جس نے صرف $15 ملین میں امریکہ کا سائز ڈبل کر دیا۔ اور یہی اس مثال کا سبق ہے۔ دو بالکل مختلف لیڈرز، ایک پریکٹیکل ڈیل، اور ایک قوم کا مستقبل ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ یہ مثال آج پاکستان کی صورتحال پر بھی لاگو ہوتی ہے، جہاں قومی مفاد کے لیے ایسی ہی سمجھداری کی ضرورت ہے۔ اور یہی سورس کا حتمی پیغام ہے، اسٹریٹجک معاملات پر ہم آہنگی کی بنیاد تو پہلے سے ہی موجود ہے۔ اب ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ اس ہم آہنگی کو عملی تعاون یعنی کنورجنس میں بدلا جائے۔ تو آخر میں سورس اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ایک سیدھا سا سوال رکھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قومی سلامتی کے لیے ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجک ساتھی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی ہے یا پھر ایک ایسی پارٹی کے ساتھ جو صرف وقتی فائدے کا سوچے۔ فیصلہ اب ان کے ہاتھ میں ہے۔